Good morning, my dear student. Today topic is decomposition reaction. Decomposition reaction. Decomposition reaction means कोई कंपाउंड को क्या करना है कि डिकम्पोज करना, ब्रेक कर देना. तब वन कंपाउंड कोई रिएक्शन इन द एनी रिएक्शन सो द कंपाउंड इज break into two or three in compounds. A compounds break into two or three compounds, atoms, molecules. This reaction is known as the decomposition reaction. जैसे the reaction in which one compounds or elements decomposes in two or more compounds. Two or more compounds or elements are known as decomposition reaction. A decomposition reaction is just the opposite of combination reaction. Opposite of combination reaction. Example: general representation by AB. It is a compound. It is a compound decomposed by A and B. Example आपका है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. Calcium carbonate solid. When heated calcium carbonate, so it is converted to compose calcium oxide plus carbon dioxide gas. Calcium oxide solids and carbon dioxide gas. This is the calcium carbonate, calcium oxide, carbon dioxide. Calcium carbonate, calcium oxide, carbon dioxide. First example. Another example, ferric hydroxide FeOH का whole thrice solid. फेरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड इसके 2 मोल्स लेते हैं और इसको हीटेड करते हैं तो Fe2O3 और प्लस आपका हो जाएगा वाटर लिक्विड आयरन ऑक्साइड. दिस इज द फेरिक हाइड्रोक्साइड. इट इज द आयरन ऑक्साइड and water. This is the reaction is ferric hydroxide converted into decomposed into breaks into Fe2O3 plus H2O water. So decomposition reaction are the two types. Decomposition reactions are
two types. Decomposition are two types. First is the thermal decomposition. First is the thermal decomposition. Thermal decomposition means होता है the decomposition of substance. The decomposition of substance. The decomposition of substance on heating is known as thermal decomposition. This example: lead nitrate PbNO3 खोल टॉइस, इसके 2 मोल्स लेते हैं. लेड नाइट्रेट when heated it decompose to PbO plus 4NO2 plus oxygen gas solid. Lead nitrate converted into lead oxide, nitrate and oxygen. This is the thermal decomposition reactions. Okay, my dear student, so today my topic is जो decomposition reactions. डिकम्पोजिशन इसमें होता है कि कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम क्या करें 1 और मोर कंपाउंड्स में ब्रेक कर देना, आपको डिकम्पोज्ड कहलाता है. मतलब डिकम्पोज मतलब किसी को बिल्कुल से रिड्यूस हो जाना, डिकम्पोज होना, मिक्स जाना अदर कंपाउंड्स में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी होती है. ओके, एग्जाम्पल: कैल्शियम कार्बोनेट, हीटेड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. lead nitrate heated to lead oxide, nitrate and oxygen. This is the example of decomposition reactions. Decomposition are two types. Thermal decomposition. First is the thermal decomposition. The thermal decomposition, the decomposition of substance on heating is known as the thermal. Heat करने से कोई compound अगर किसी में convert होता है, if when you heated any compound, then easily converted into other compounds. This is the thermal decomposition.